क्लियर है और अरे ये दोनों उसके है ना, ये 7th A में है ये दोनों बच्चे ए में। हाँ इसलिए तो तभी वापस किया ये वो आरती जोशी नाम काची जी पे ना कल देगा। So good afternoon, welcome back all of you. How many are there? 10. Okay. So today we are going to start new lesson. Okay, previous lesson we have completed. Now question answers, students. I will give both the lesson question answers together. Okay, lesson number 8 and lesson number 10. Those who have old books, for them this is lesson number 10. And those who have a new edition, new book, so this is for them, this is lesson number 9. Okay, one chapter from NCERT, one chapter they omitted. Okay, एक chapter को उन्होंने omit कर दिया. That means that 9th chapter. Okay, now in a present book, there this is the last lesson. Okay, life in the desert. Understood? Okay, so now life in the desert. Just we will recap chapter 5 in that, because first we have to understand the heading, life in the desert. So just we have to relate with the previous chapter, that is chapter number, not previous, means chapter 5, water. Do you remember? So in that chapter, water and its significance, कि water जो है वो कितना important होता है for all living beings, for animals, for plants, for human beings. That means without water we cannot survive. Yes, got it? हमने ये सब देखा था किसमें? चैप्टर 5 में, है ना? हमने चैप्टर 5 में हमने देखा कि वाटर जो है इसका सिग्निफिकेंस कितना होता है, बहुत ज्यादा है कि विदाउट वाटर नो वन कैन लिव. Okay, so now imagine the survival in the desert. Now just you imagine, now imagine the survival in the desert area. The desert. Why? Because we know that in this lesson we have already learned that without water people cannot live. Not only people, all the living organisms, है ना? All the living organisms जो है water बहुत जरूरी होता है सबके लिए. But now just to imagine कि the survival in the desert, लोग desert में कैसे रहते होंगे? How? है ना? Just to imagine कि हमने एक चैप्टर में देखा कि विदाउट वाटर नोबडी कैन लीव, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि लाइफ इन द डेजर्ट, डेजर्ट में लाइफ कैसा होगा. सो हाउ मींस सर्वाइवल, इज इट पॉसिबल इन द लाइफ इन द डेजर्ट एरिया? सो दैट ओनली वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, अब ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाला है कि देखने वाले हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसे होता है. They're the lifestyle people, those who used to live in the desert, because deserts are also two types of desert, है ना? Desert भी तो दो types के होते हैं. One is the hot desert and another one is the cold desert. So we will here in this lesson both the desert we will cover, both hot and cold. Okay. Now we know that the places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle के लिए भी to feed on, then water, there is no water to help the crop to grow. ऐसे भी तो है ना बहुत सारे places में. Okay, and water to help the crop, water to help the crops to grow. Now just we will characterize, we will see, we will characterize desert. अगर हम desert को characterize करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? How we will characterize desert? How we will characterize desert?
कैरेक्टराइज करेंगे डेजर्ट को? कैसे बोलेंगे कि डेजर्ट अगर हम है, डेजर्ट को हाउ वी विल से? डेजर्ट मींस व्हाट? फर्स्ट दैट इज द स्कैंटी रेनफॉल. दूसरा हमारे दिमाग में क्या है? डेजर्ट मतलब रेन, सैंड, है ना? हम ये भी बोलते हैं डेजर्ट मींस Ira, what you have written? High or low temperature? Yes, high temperature, hot, scorching heat, scanty rainfall, isn't it? These, yes, extreme temperature. Yes, so low rainfall, then scanty vegetation. Okay, extreme temperature. So, how will we characterize the desert? So, these are the words. We can say extreme temperature. ओके, हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा डेजर्ट में क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. देन स्कैंटी रेनफॉल. रेनफॉल भी जब बहुत कम होता है, रेनफॉल जो है क्या होता है? वेरी लेस. तो स्कैंटी रेनफॉल. देन वेरी लेस वेजिटेशन. वेजिटेशन भी वहां बहुत कम होता है. So less vegetation. So these, like these only we will characterize desert, है ना? Desert को अगर हम characterize करेंगे तो हम यही बोलेंगे ना, extreme temperature, scanty vegetation, scanty rainfall, less vegetation. ये सारा चीज जो है वो क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं this is desert. So now depending on the temperature and this one we can divide the desert two types, that is the hot and cold desert. अगर हम टेम्परेचर ये सारा चीज देखेंगे टेम्परेचर के इससे, तो हम डेजर्ट को दो इसमें डेजर्ट को डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट डेजर्ट दैट इज hot desert. Okay, hot desert, and the second one is cold desert. Okay, so we will characterize hot desert and cold desert. Now from this chapter we learn about the places around the world where people have learned to cope up with the extreme and harsh climate, जो कि है सहारा डेजर्ट. एक्सट्रीम बोथ, कोल्ड ले लो या हॉट ले लो. हॉट डेजर्ट दिस इज नॉट इन आवर country, but the cold desert it is there in Ladakh, Ladakh, that is in our country. Okay, so from this chapter we are going to learn कि लोग ऐसे डेजर्ट में ऐसे कंडीशन में किस तरह से रहते हैं, their lifestyle. Okay, what type of vegetation there, which animals, flora, fauna, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे. Both desert, that is the hot desert. So to example, it is two case studies we can say. Hot desert means Sahara desert and cold desert means Ladakh. Okay, तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है. एक हॉट डेजर्ट का जो कि सहारा के बारे में हम पढ़ेंगे, और कोल्ड डेजर्ट में हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ इन द डेजर्ट्स. ओके, now first we will see the hot desert Sahara. Now first we will see the hot desert Sahara. Okay, the hot desert Sahara. Okay, you know everybody, Sahara is the world largest desert. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट. Where it is present, that is also you know, it is in Africa.
अफ्रीका इट इज वन कॉन्टिनेंट, यू नो वेरी वेल कौन से कॉन्टिनेंट में ये आता है, अफ्रीका में आता है. नाउ if we will see the position, okay, उसके पोजीशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, and why it is a hot desert, because the location, सबसे first thing is that is the location, because Africa it is located where, near the equator. कहाँ पर ये लोकेट होता है अफ्रीका? If we will see about this continent Africa, then where it is located? It is located near the equator. So when it is located near the equator, that means what? Direct sun rays falls, है ना, क्योंकि ये direct sun rays वहां पर fall होता है. Now in your textbook one map is also given there. एक map भी दिया है आपके textbook में. Just you look at here, because I don't have the textbook now, but just all of you look at the map, then we will understand the exact location of the Africa, sorry, desert, Sahara desert. Africa में Sahara desert का location का अफ्रीका में है, बट ये जरूरी नहीं है कि सहारा डेजर्ट पूरा अफ्रीका में. अभी बहुत सारे जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, वो भी तो उस कॉन्टिनेंट, बट एकदम बॉटम में. सहारा डेजर्ट उसका जो लोकेशन है वो एकदम इस कॉन्टिनेंट के सबसे ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो वहां पर सहारा डेजर्ट लोकेट करते हैं, एंड साउथ अफ्रीका बॉटम में है. तो सनराइज जो है वो कहाँ फॉल होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है. और सहारा डेजर्ट अगर हम देखेंगे, सहारा डेजर्ट तो एरिया वाइज वो इतना बड़ा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट. ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट. ओके, यस, it is covering the large part of a North Africa. Yes, of course, Sahara desert it is covering the large part of North Africa, and that is bottom, that is the South Africa. Okay, because Africa it is a one continent, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो both नॉर्थ एंड साउथ दोनों इस पे हुआ है, दोनों हेमिस्फीयर में ये जो है अफ्रीका जो है ये प्रेजेंट है. और दोनों हेमिस्फीयर में इट इज प्रेजेंट, एंड ऑल द थ्री latitudes, that means tropic of Cancer, equator and tropic of Capricorn, that is also passes from the Africa. Okay, so these things you have to keep it in your mind, that Africa, this is the one country where it is present in both the hemisphere, northern hemisphere and the southern hemisphere. Then all the three latitudes, equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn, it is passes through Africa, this continent. Okay, now it is the world, so we have to understand the geography of the hot desert Sahara. We have to understand the geography of this one, Sahara desert. So it is the world largest desert, and it has an area of around 8.54 million square. If we will see the area of Sahara desert, and 8.54 million square, 54 million square kilometer. Okay, million square kilometer. Now just imagine if we will talk about our country's square, that area, then our country's area, if it is, this is 3 point something, nearly 3.28 million. 3.28 million. अगर हम देखें अपने कंट्री का तो 3.28 million. Okay, and whereas Sahara desert, the area that is 8.54 billion, नियरली डबल हम बोल सकते हैं कि ये इतना बड़ा सहारा हो. 11 सिटी, it is
Nearly 11 city covered the Sahara desert. Kitna city it is covering? 11 city. Okay, understood? Now, it is the world's largest desert and it has an area of around 8.54 million square kilometer. Then the Sahara desert touches 11 countries. How many countries it touches? 11 countries it touches. 11 countries. Okay, it touches 11 countries. Which countries? Already it is given in your textbook. All the countries name. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia, and Western Sahara. So all the 11 countries this far, all these points you have to underline, students. All these points you have to underline in your textbook that it's a square. Kitne area that area of Sahara desert that you have to underline. Then the Sahara desert touches 11 countries. That name also you have to underline. All of you underline this name also. Okay. Now, if we will talk about the desert, अगर हम desert का बात करते हैं, so automatically in our mind what will come? Desert means desert is equal to what? Sand, है ना? हमारे माइंड में क्या आता है कि desert means what? Desert means only sand, wrong. बहुत सारे geographical features होते हैं. This is only I am talking. Somebody has written sand. Yes. Desert means sand. No. This is not right. Desert means sand ही नहीं होता है. Desert का मतलब सिर्फ sand नहीं होता है. Desert में बहुत सारे features और भी होते हैं. Desert में आप see already we have discussed about the mushroom rock. हमने mushroom rocks के बारे में पढ़ा था. Yes. So rocks, different rocks हमको देखने के लिए मिलता है, plateaus वहां पर देखने के लिए मिलता है. So these are the different features. So हम ये नहीं बोल सकते हैं कि desert means sand. और ये sand actually sand क्यों होता है? Because क्या reason है? इसके पीछे क्या reason है कि why desert जो है desert को हम लोग sand ही क्यों बोलते हैं? क्या पता? The reason is that in this area very less rainfall is there. ओके बहुत कम रेनफॉल होता है. जब बहुत कम रेनफॉल होता होगा उसमें तो उसके अंदर क्या होगा? मॉइस्चर बहुत कम होगी, है ना? अब रेनफॉल ही नहीं है तो सॉइल में क्या होगा? मॉइस्चर नहीं होता है. जब सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता है तो वो सॉइल धीरे 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 क्या हो जाता है? एकदम हार्ड हो जाता है ना? जब वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है वो ब्रेक्स होना स्टार्ट करता है. जब वो ब्रेक्स होते रहते हैं धीरे 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 वो किसमें फॉर्म होते हैं? ग्रैन्यूल्स में फॉर्म होते हैं. एंड देन इट फॉर्म एज अ desert. उसको बोला जाता है कि वही granules it turns into a sand and that's why it's known as a desert. इसके पीछे ये रीजन है कि सहारा डेजर्ट क्यों बोलते हैं. डेजर्ट इसीलिए बोला जाता है क्यों? क्योंकि वहां स्कैंटी रेनफॉल है. रेनफॉल बहुत कम होता है. जब रेनफॉल कम होगा तो सॉइल में क्या होगा? मॉइस्चर नहीं रहेगा. ओके, मॉइस्चर कम होता है. ग्रेवल, प्लेन्स, एलिवेटेड, यस, प्लेटू, रॉकी सरफेस, these are the different features. तो हम ये नहीं बोल सकते कि desert means only sand. We can't say that desert means only sand because there also different features are there. Mountains, plateaus are there, rocky surface are there. So these are the different features are also. And why desert means sand? Because this reason. Because rainfall is less, soil in that the moisture is very less, and due course of heat की वजह से क्या होता है? सॉइल जो है इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है और धीरे धीरे स्टार्ट्स ब्रेकिंग. उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है. जब वो क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएगा फिर स्ट्रॉन्ग विंड और उससे क्या होता है? वो ब्रेक्स हो जाते हैं. फिर वो ग्रैन्यूल्स टर्न फॉर्म करते हैं and that is desert. That's why we know as a desert.
Understood? So the hot desert, that means what? Then these are the different. This is the reason, and because why the जो सनरेज जो है वो तो नीचे तक पेनिट्रेट ही नहीं हो पा रहा है, मतलब एकदम नीचे को जो है वहां तक वो क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं नीचे तक। अगर आप देखेंगे सपोज एक ये हम देख रहे हैं दो सरफेस, या हम जस्ट अ मिनट, so land surface, these are the two different land, okay? So here enough rainfall is there, है ना, अच्छा rainfall यहाँ पर होता है। Here less, more rainfall, okay, more rainfall, and here less, very less rainfall, okay। अब यहाँ पर इस लैंड में बहुत कम रेनफॉल होता है, इस लैंड में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। सॉइल में मॉइस्चर होता है, हियर सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। अब सॉइल में जब मॉइस्चर नहीं होता है तो सॉइल तो ब्रेक हो जाता है। जब सॉइल ब्रेक होता है तो सनरेज जो है वो डायरेक्ट नीचे तक पेनिट्रेट करती है ना, डायरेक्ट नीचे तक वो पेनिट्रेट करती है। Whereas here soils are together एकदम, क्योंकि यहाँ पर soil break नहीं किया तो सनरेज जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट करने के लिए उनको टाइम लगता है, मतलब नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता है ना। यहाँ पर सनरेज नीचे पेनिट्रेट नहीं हो पाता, यहाँ क्योंकि लेस रेनफॉल है, इजीली सॉइल ब्रेक हो जाता है, इजीली वो नीचे पेनिट्रेट हो जाता है सनरेज। आगे हम इसके आगे भी हम पढ़ेंगे क्लाइमेट में कि सहारा डेजर्ट में, डेजर्ट एरिया में दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, रात को टेम्परेचर माइनस हो जाता है, वो क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो द one region. So you understood about the hot desert Sahara, that area wise it is the world largest desert, where its a location also we understood, it is the northern part of the Africa, okay, where it is covering the larger part of the North Africa. Area wise 8.54, 11th country, it touches the 11th country, okay. Now we will discuss about the climate. Now we will discuss about the climate of the Sahara desert. Now we will see the climate of Sahara desert. Now the climate of Sahara desert, that the climate of Sahara desert is scorching, hot and parched dry. Scorching, hot and parched dry. Scorching hot means इतना ज्यादा मतलब हीट होता है। क्लाइमेट कहाँ पर? सहारा डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा होता है? स्कॉर्चिंग, हॉट एंड स्पार्श ड्राई। स्पार्श ड्राई मींस इतना ज्यादा गर्मी के वजह से वो जो है ड्राई हो जाता है, दैट इज ओनली नोन एज अ पार्च ड्राई, ओके। Then the sky is cloudless and clear and days are unbelieving hot. क्लाउड्स जो है एकदम क्लियर होता है, ब्यूटीफुल स्काई अगर हम देखेंगे कोई क्लाउड्स नहीं होता है, एकदम क्लियर होता है। क्यों क्लियर होता है? क्योंकि वहां कोई वाटर ही है नहीं, तो इवेपोरेट कैसे होगा? जब इवेपोरेट नहीं होता वाटर तो वहां क्लाउड्स फॉर्म नहीं रहता, इसलिए स्काई जो है एकदम क्लियर लगता है। वहां पर सहारा डेजर्ट में जो है स्काई जो है एकदम क्लियर होता है, because no water is there, so evaporation is very less. When evaporation is very less, so cloud formation is not there, okay. Then temperature is in a daytime that is unbelieving hot. Unbelieving hot मतलब इतना ज्यादा वहां पर गर्मी जो हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, नॉर्मली we cannot believe.
So the temperature during the day may soar as high as 50 degree. Daytime में वहाँ daytime temperature will be 50 degree. 50 डिग्री सेंटीग्रेड डे टाइम में टेम्परेचर जो है वो कितना होता है 50 डिग्री whereas the nights may be freezing cold with temperature that is 0 degree and night time temperature is 0 degree. Now how is possible? Temperature daytime it is a 50 degree centigrade, whereas night time it is freezing cold 0 degree temperature. How it possible? Yes, any idea? कैसे पॉसिबल होता है कि डे टाइम में टेम्परेचर जो है एकदम हाई हो जाता है 50 डिग्री, whereas नाइट टाइम वेरी सूदिंग दैट इज द 0 डिग्री, एकदम फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री में आ जाता है. सो हाउ इट पॉसिबल? हाउ इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डे में 50 डिग्री है, डे टाइम में 50 डिग्री है, नाइट टाइम में 0 डिग्री है. सो हाउ इट पॉसिबल? एकदम कोल्ड हो जाता है टेम्परेचर, नियरली 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है. यस एनीबडी? ड्यू टू यस ईशान व्हाट हैपेंड? राइट, Ishan or Arya, you have joined. Who have joined? Yes. What is the reason? क्यों होता होगा ऐसा? Yes, anybody? हाँ, Alice has written because there is no sunlight and soil loses its heat. Okay, okay, Alice. Okay, let's see what others are writing. Ishan. Yes, Ishan. Do you want to write any answer? Do you want to give? Do you know the answer? What is the reason? Why in a daytime this is a 50 degree temperature, very high, and then the daytime this temperature going down, that is nearly 0 degree temperature. What is the reason? Alice has given the answer. What other students try to give the answer? If you know the answer, please write it in the chat box. Do you have any idea? Due to equator. Okay, no. Somehow she has given the answer. This it is correct only. Why? Because here this network connection is again going and coming, going and coming. क्यों? क्योंकि जो सनरेज जो है यहाँ पर नीचे तक पेनिट्रेट हो जाता है. जब वो नीचे तक पेनिट्रेट क्यों दे? क्योंकि सनरेज होता है ना. इस केस में जहां पर सहारा डेजर्ट जहां लेस वाटर है, सनरेज तो नीचे तक पेनिट्रेट हो जाता है. अब जब नाइट है तो मून आ गया, सन तो है नहीं, मून है, तो उतने ही जल्दी जो सोलर इंसुलेशन होता है, जो सोलर इंसुलेशन होता है वो उतने ही जल्दी वहां से चले जाता है, मूव्स टू अपवर्ड डायरेक्शन उतने ही जल्दी. क्यों? क्योंकि ये क्या है, सॉइल ऑलरेडी ब्रेक है, यहाँ पर बहुत पैक में नहीं है, ब्रेक किया हुआ है सॉइल. तो जितना जल्दी वो सोलर इंसुलेशन नीचे जाता है, पेनिट्रेट होता है, उतना ही जल्दी सोलर इंसुलेशन वापस भी चले जाता है. इसलिए डे टाइम में जो है वहां पर टेम्परेचर फ्रीजिंग होता है. Whereas जहां पर सॉइल एकदम पैक है तो सोलर इंसुलेशन जो पेनिट्रेट सनरेज जो है उतना नीचे तक वो पेनिट्रेट नहीं होता, उसको टाइम लगता है. अब जब सन मून आ जाता है तो उसको वापस जाने के लिए टाइम लगता है ना. तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे इस एरिया में समर वेकेशन में भी, समर में भी आपको क्या होता है, रात में भी गर्मी लगती है, दिन में भी गर्मी. बट यहाँ पर और सैंड जो होता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है. दिस इज द रीजन दैट डे टाइम टेम्परेचर इज 50 डिग्री एंड नाइट टाइम इट इज वेरी कूल. Again I am explaining. Ishan has said, ma'am, again you explain. See why? Because we know that in Sahara desert less rainfall is there. बहुत ही कम बारिश होती है.
जब बहुत कम बारिश होती है तो सॉइल जो है उसमें क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है, गैप आता है। इतना सॉइल जो एकदम पक्का बंधा हुआ नहीं था, उसमें क्रैक्स बहुत है। तो क्या होता है ना कि डे टाइम में सोलर जो हीट है, सनरेज जो है, वो इजीली पेनिट्रेट होते होते नीचे तक वो जाता, सॉइल के नीचे तक वो जा सकता है ना, डे टाइम में। तो वो क्या होता है, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा होता है डे टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है, क्योंकि सनरेज तो है नहीं, अब मून है, तो सोलर इंसुलेशन जो है, हीट जो है, वो उतने ही जल्दी वापस चले जाते, क्योंकि यहाँ तो हीट है नहीं ना, सनरेज तो वापस वो नहीं हो रहा, तो जो हीट था वो उतने ही जल्दी वापस जाके ठंडा हो जाता, वापस जाना मतलब ठंडा हो जाता है, क्योंकि अभी तो हीट मिल नहीं रही है। तो इसलिए नाइट में यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। Understood, all of you? Okay. Now the next topic, flora and fauna, that we will discuss tomorrow. Okay. Now I am sharing that attendance link, so all of you submit your attendance. So submit your attendance, all of you. Everybody submitted. Shardul, you have written, I didn't understand. Now I am seeing your Shardul. क्या नहीं समझ में आया बेटा? Shardul, you have written, now I have checked, beta. What you have not understand? I didn't understand, ma'am, exactly what you want. Shardul, आपको क्या समझ में नहीं आया? Now I have checked the chat, so I observed that you have written. Ishan has given, ma'am, explain again. So मैंने वो तो explain कर दिया. Yes, Shardul, can you hear me? शार्दुल, आपको क्या समझ में नहीं आया था? Are you there? Are you there? Okay, this part, okay, I will again tomorrow, I will make you to understand. I explain, I will, that climate, this part again I will explain you. Okay. So thank you all of you. Have a nice day. Shall I end here? Children, have you submitted your attendance? Okay.